So let's resume. Okay. So beta, we have done a basic problem on great circle sailing. If both the positions are given to us, initial and final position, latitude and longitude, we are able to calculate the great circle distance and the initial and final courses just by using the cosine formula. Now we are going one step further. When we plan a great circle passage, now as I told you, a great circle passage appears as a curved track on a Mercator chart. So there is no way to draw that curved track. So what we actually do is we find out intermediate points on that curved path and we join those intermediate points by straight lines or rhumb lines. So we do not practically follow the curved great circle path. What we actually follow is the series of rhumb line courses or the series of rhumb line tracks. Now, when we want to find out these waypoints, you can call them as waypoints. When we want to find out these waypoints, we cannot find them directly by using any method, cosine formula or Napier rule. They cannot be directly obtained. For finding all these intermediate points or waypoints, what we require is the vertex of the great circle. So let us now see what is this vertex, and later on after that, let us see how do we use this vertex to find out the intermediate points or waypoints. So let's go into the presentation. Okay. Now, vertex is the position where the great circle track reaches its highest latitude. So that point where the great circle track reaches its highest latitude is known as the vertex of that great circle. Every great circle will have two vertices. One of them will lie in the northern hemisphere and one of them will lie in the southern hemisphere. Now at the vertex, there are some important things which happen at the vertex other than reaching at the highest latitude. At the vertex, the direction in which the great circle track runs is always 090 or 270. In other words, when you follow a great circle track and you reach at the vertex, that time your course will be either 090 or 270. Okay, so that's an important property of the vertex of the great circle. And obviously, when you are at the highest latitude, it is at this particular point that you are closest to the nearest pole and you are farthest from the equator. Equator is the only special great circle which does not have any vertex. So there is no vertex on the equator. Now to give you an example, you can see a diagram here. We can see the Earth. You can see the North Pole on top, the South Pole at the bottom, and exactly midway you can see the equator. Now this green color circle which is shown here, this is a great circle. This is the green color circle. Half of it is marked as a solid line. It is the great circle which is on our side. It's a 3D kind of diagram.
And the great circle track which is facing our side is marked by a solid line, and which is on the other side of the screen, on the opposite side of the screen, is marked by a dotted line. So you see, when the ship is moving on this great circle track, something like this, it will cross the equator at this particular point. This is where it will cross the equator, and then proceeding ahead, this is the point where it will reach at the highest latitude in the northern hemisphere, and this is the vertex. So after this, the ship will start to proceed southwards. It will again cross the equator on the opposite side. Somewhere here it will cross the equator, and then it will proceed southwards, and it will again attain the maximum southerly latitude where the vertex is shown in the southern hemisphere. So this is the point where it is again going to attain its highest southerly latitude. After crossing this point, the latitude will decrease and it will again come back towards the equator. So this is the concept of the vertex, where the great circle track reaches its highest latitude. Now, one important property of vertex I already shared with you, that when you reach at the vertex, when you are moving on the great circle track, the course of the ship will always be either 090 or 270. If you are moving in the easterly direction, your course at the vertex would be 090. And if you are moving in the westerly direction, the course at the vertex would be 270. Another important property of vertex is, if you look carefully, there are 4 reference points in this blue color circle. 2 points where it is crossing the equator. They can be called as equator crossing points, and 2 points which are shown as the vertex. Now you see, because of the symmetry of the sphere and the circle, all these 4 points will be equidistant from each other. Okay, they will all be equidistant from each other. From one equator crossing point, when you reach up to the opposite one, it will be exactly 180 degrees. One equator crossing to other crossing is exactly 180 degrees in between, and the vertex will lie exactly midway between them. So from equator crossing to vertex is 90 degrees. Vertex to second equator crossing, again 90 degrees. Second equator crossing to the south hemisphere vertex, again 90. South hemisphere vertex back to equator crossing, again 90 degrees. So vertex is at 90 degrees d long from the equator crossing point. Okay, this is the second important property of vertex. One is the track always attains easterly westerly direction, 090 270 direction. Second is it is at 90 degree d long away from the equator crossing points. Now these properties are sometimes used in forming the questions on great circle sailing. Okay, another important thing which we can see from the diagram is that the angle at which the great circle plane cuts the equator. In this case, this angle is 33 degrees. You can see it here. It is represented by the orange shaded portion. This angle is 33 degrees. So the angle at which the great circle plane cuts the equatorial plane, or the great circle cuts the equator, is same as the latitude of the vertex. You can see the latitude of the vertex is 33 degrees. The angle at which the great circle cuts the equatorial plane, or angle at which the great circle cuts the equator, is also 33 degrees. So latitude of the vertex is the same as the angle of cut between the equator and the great circle. Okay, this is what we just now discussed. The vertices will be located with a d long of 90 degrees from the position where the great circle track cuts the equator. Okay, so you can see this is the equator crossing point. After this,
if you move on the great circle track, this is where the vertex is, and the d long between these two would be 90 degrees. And when you reach at this point, the course or the direction of the track would be 270 and 090. The latitude of the vertices is equal to the inclination or the angle of cut between the plane of the equator and the plane of the great circle. Just now what we discussed. Okay, this I have already told you. Vertex helps us in quickly calculating the position of any intermediate point on the great circle track. So when we want to plan a great circle passage, we have to first calculate where the vertex is. Once the vertex is known, any intermediate point can be easily calculated. This is seen. Okay. Now, beta, the first question which would come in our mind is, as I told you, every great circle will have two vertices, one in the north hemisphere, one in the south hemisphere. So which vertex should we use for our calculation? So it is selected exactly in the same way as we selected the pole of the PAB triangle. If both your positions, position A and position B, they lie in the same hemisphere, the vertex to consider also lies in the same hemisphere. Both positions are in north hemisphere, you will take the vertex of north hemisphere only. If A and B lie in different hemisphere, A is in north hemisphere, B is in south hemisphere, the vertex to consider lies in the hemisphere which has the higher latitude. Okay. Now, let us say you see this diagram on the right hand side. We are going from north to south hemisphere. Latitude of A, let's assume, is 40 degrees north, and latitude of B is 30 degrees south. So higher latitude is on the northern hemisphere. So we will consider the vertex of the north hemisphere only. The second important thing to know when we calculate the position of the vertex is, now there are two options, two possibilities are there. One possibility is, if you see in this diagram, we have this PAB triangle. This is the PAB triangle, and you see that the vertex is outside this triangle. So that's one possibility. Vertex could be outside the triangle. The second possibility could be the vertex may be inside the triangle. Like this triangle, if you see. Okay, better just give me 1 minute. I'll be back. Okay. So पहला ऑप्शन बेटा जो हमने अभी देखा that the vertex was outside the triangle, ये second option अगर आप देखो, this is the PAB triangle which we have, and in this case you see the vertex is inside the triangle. So we have to first find out whether the vertex lies inside the triangle or it lies outside the triangle. This is important before we calculate the position of the vertex. So that is what we understand by position of the vertex. Now, how to find out if it lies inside
or it lies outside the triangle. We have calculated angle A and angle B of the PAB triangle. Be careful, I am telling you about the angle, not the courses. कोर्सेज हमने कैलकुलेट किए 1 to 3 मेथड से, आंसर में लिख दिए, हमारा काम हो गया. अब वी आर बैक टू एंगल. ओके, सिंस वी आर इन्वॉल्व विद स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, वी आर टॉकिंग ऑफ द एंगल. ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हमने निकाले हैं, ए एंड बी, इन एंगल्स को आप ध्यान से देखो. अगर ये दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, which means they are less than 90 degrees, then in that case, the vertex lies inside the spherical triangle. So if both the angles are acute angles less than 90 degrees, the vertex will always lie inside the spherical triangle. अगर इन दोनों में से कोई भी एंगल, एंगल A or angle B, any one of the angles becomes obtuse, that means it is greater than 90 degrees, the vertex will lie outside the spherical triangle. So if any of the angles A or B is obtuse, that means greater than 90 degree, vertex will lie outside the spherical triangle. And जब ये outside है, तो दूसरी चीज हमें ये देखनी है, ये किस तरफ outside है, towards A or towards B. It will be outside on the same side on which the obtuse angle is present. Like in this diagram which you see, angle A is a obtuse angle. It is greater than 90 degrees. So vertex 1, it will lie outside, and number 2, it will lie on the side of A, extended outwards. So with this, we check whether the vertex lies inside the triangle or the vertex lies outside the triangle. Okay. Okay. Now, when we know where is the vertex, whether it is inside or it is outside the triangle, it is very easy for us to find out the position of the vertex. So let's go to whiteboard now and see how can we find out the position of the vertex. Let's erase the whiteboard. Okay. So अब बेटा मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, PAB ट्रायंगल. We will take an example. You want to take the vertex inside or you want to take the vertex outside? किससे पहले समझना है बेटा? Inside, sir. Okay. So let's try to see how do we calculate the vertex if it lies outside. So let us say this is our starting point. This is our destination point. You can see here, let's say this is A, this is B, and this is our destination B. So we can see here angle B in this triangle is a obtuse angle. When we calculate it using the cosine formula, immediately you will come to know whether it is acute or obtuse. So this is a obtuse angle. If this is obtuse, we know the vertex is going to lie outside. So I make the vertex outside at any point. You can make it at any point and name it as V. Now beta, at the vertex, just now we saw in the presentation, what is the direction in which the great circle runs? East-west. So the great circle is going to run in the east-west direction. And beta, what is the direction in which the meridian runs? North-south. The meridian runs north-south. So इनका जो intersection point है, वहाँ पे कौन सा angle बनना चाहिए? 90 degree.
90 degree. 90 degree here, because great circle track east west run कर रहा है, meridian north south run कर रहा है, so intersection point should be 90 degree angle. So अब बेटा हमने ये 90 degree angle यहाँ पे शो कर दिया है, and now we can consider any one of the two triangles. We can consider PAV, Papa Alpha Victor, or if we want, we can consider Papa Bravo Victor also. Let's first consider Papa Alpha Victor and see how can we find the vertex. If you look at triangle Papa Alpha Victor, it is a special spherical triangle. It is a special spherical triangle. What is the speciality? Angle Victor or angle V is a 90 degree angle. And in this triangle, we know some things. What do we know? One side which we know is, let me pick up the green color. Napier rule. Side PA. Side PA is known to me because it is the colat of A. Both the positions, latitude and longitude is given to me. So side PA is known to me, and also I have calculated angle A using the cosine formula for finding my initial cos. So this is also known to me. So these are the two things in this particular triangle, Papa Alpha Victor, which are known to me. Using these two, I will apply the Napier's rule and we can find out anything else in this triangle. So, beta, you want me to apply the Napier's rule या आप लगा लोगे? एक एग्जांपल बता दो. ओके, ऑल राइट. तो मैं ये पीएवी ट्रायंगल पे नेपियर रूल लगाता हूँ. सबसे पहले तो नेपियर डायग्राम बनाते हैं. ये मैंने सर्कल बना दिया. अब इस सर्कल में 5 पार्ट बना दिए. So we have the 5 parts here. Since it's a right angle triangle, मैंने नीचे के तीनों पार्ट में 90 माइनस और 90 माइनस यहाँ पे लिख दिया. अब मैंने पार्ट्स को फिलअप करना है. 90 डिग्री वाली जो चीज है उसे तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम. तो V एंगल कम्स हियर. लेट्स मूव क्लॉकवाइज इन द डायग्राम. तो V के बाद जो पहली साइड आएगी वो होगी अल्फा विक्टर. तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही फिलअप कर लेते हैं. तो लेट्स राइट द फर्स्ट पार्ट हियर. इट इज अल्फा विक्टर. सेकेंड चीज जो आएगी वो होगा एंगल A. So this would become 90 minus angle A. Third item जो आएगी that will be AP or PA, anything. So 90 minus PA. Fourth item would be angle P. So let's write P here. And the last item would be Papa Victor side. So Papa Victor. And we are back to V in the triangle. And we are back to V in the circular diagram also. तो अब बेटा ये पांचों पार्ट हमने फिलअप कर दिए. लेट्स सी कौन कौन से पार्ट हमें पता है. वन पार्ट विच इज नोन एज पापा अल्फा. सो दिस पार्ट इज नोन टू मी. सेकेंड पार्ट विच इज नोन एज एंगल ए. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन टू मी. अब इसमें हमने ढूंढना क्या है बेटा. सबसे पहले हम ढूंढेंगे साइड पापा विक्टर. लेट मी मार्क इट इन द डायग्राम. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. Side Papa Victor. अब बेटा इन तीनों में से can you tell me which will be the middle part? PV. Very good. The PV Papa Victor is going to be the middle part. So if you want, you can put the formula. It will be sine of the middle part. Cos opposite. Of PV is equal to cos opposite part. So cos of 90 minus A. This is in bracket, multiplied by cos of opposite part 2, which is 90 minus PA. Okay, so अब इसमें हमें A भी पता है, this is known to us, PA भी पता है, known to us. दोनों वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, we can easily find out what is Papa Victor. अब बेटा जो पापा अल्फा था, that was the colat of A. जो पापा ब्रेवो था that was the colat of B. What will be Papa Victor then?
vertex. Very good. It will be the colat of the vertex. So 90 minus Papa Victor gives you the latitude of the vertex. Vertex का latitude हमारे पास आ गया. Single application of Napier rule and the vertex is known. So up to here clear beta? Okay. So let's now proceed further. अब दोबारा से नेपियर रूल अप्लाई करते हैं इसी ट्रायंगल में. And now what we do is we will find out now angle P. तो ये वाला जो पार्ट है, this part is what I'm going to find out now. अब 90 minus P हमने find out करना है ये part. 90 minus A, 90 minus P, ये both are known to us. So middle part इसमें easy है, 90 minus P बनेगा. So sin of middle part और इसमें फॉर्मूला लगेगा adjacent वाला, tangent 90 minus A and tangent 90 minus P. So sin of middle part tangent adjacent 1 into tangent adjacent 2. जैसे ही आप ये लगाओगे तो आपके पास एंगल P आ जाएगा. So angle P आपके पास आ गया. Let me show it in the diagram. This is the angle P and this is the angle at the pole contained between meridian of A and the meridian of the vertex. So can you tell me what is this angle? D long. Very good. It is the D long between alpha and Victor, A and vertex. So A का longitude जो है ये हमें पता है. It is given to us in the question. So if we apply this D long to the longitude of A, you can easily find out the longitude of the vertex. So हमारे पास vertex का latitude और longitude ये दोनों चीजें आ गई हैं. So any doubts beta? Any doubts you are having? सर वन थिंग, वो नेपियर रूल में सर आपने बोला था कि जैसे जो पीजेड ट्रायंगल होता था उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो सर्कल में क्लॉकवाइज जाना होता था ना? No beta, you can go in any direction you like. ट्रायंगल और सर्कल में क्लॉकवाइज जाना है, दोनों में क्लॉकवाइज जा सकते हो. एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो. एक में क्लॉकवाइज जाना है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वो भी जा सकते हो. हर एक केस में ये सही एप्लीकेशन होगी. ओके ओके ओके. वो उस दिन आपने एग्जांपल दिया था तो उसमें पीजेड में यू वेंट एंटी क्लॉकवाइज एंड इन दिस डायग्राम यू वेंट क्लॉकवाइज. राइट. So that was intentionally done to emphasize the point कि आप clockwise, anti-clockwise कैसे भी चले जाओ, both ways it's going to be right. ओके सर. ओके. Okay. Okay. So अब हमारे पास बेटा वर्टेक्स का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आ गया है. तो अगर आप चाहो तो पापा ब्रेवो विक्टर ट्रायंगल से भी इसे सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप पापा ब्रेवो विक्टर ट्रायंगल में इसे सॉल्व करोगे तो एंगल बी को ये वाला ब्लू वाला एंगल नहीं लेना बेटा. एंगल बी को ग्रीन कलर वाला एंगल लेना है, बिकॉज पापा ब्रेवो विक्टर का जो बी एंगल है वो तो ग्रीन कलर का एंगल है. राइट. ओके. तो अब बेटा हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे. हमारे पास वर्टेक्स का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो आ गया. नाउ लेट अस से वी वांट टू मेक ए ग्रेट सर्कल पैसेज प्लान फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी ग्रेट सर्कल पैसेज प्लान हमने बनाना है. तो हाउ आर वी गोइंग टू मेक इट? हमें चाहिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स. नाउ लेट अस से ए का जो हमारा लॉन्जिट्यूड था वो है 30 डिग्री ईस्ट. Intermediate points are usually found at a interval of, generally ऐसा कोई fixed rule नहीं है, but generally हम इन्हें 5 डिग्री के डी लॉन्ग पे बनाते हैं. ओके. इनको कम या ज्यादा भी किया जा सकता है. If you want lesser way points, you can increase it to 7 degrees or 10 degrees also. अगर आपको डिस्टेंस में सेविंग जो चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए, you need to be very close to the actual great circle track, तो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो. 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज तक भी जा सकते हो. सो दिस इज यूजुअली डिसाइडेड बाय द मास्टर एंड द सेकंड मेट कि भाई ये कितने इंटरवल पे हमने पॉइंट्स लेने हैं.
सो लेट अस से हमने यूजुअल इंटरवल प्लान किया 5 डिग्रीज का, तो हमें अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए, दिस पॉइंट जिसका लॉन्जिट्यूड 35 डिग्री ईस्ट होना चाहिए. A was at 30 degree east, so we want this point, let's call this point as x. इसको मैंने x नाम दे दिया, जिसको भी ढूंढना हो उसको x बोल देते हैं ना, and we keep finding the x. So 35 डिग्री ईस्ट यहाँ पे है हमारा या हमारी x. So this is what we want to find out. तो अब ये कैसे ढूंढेंगे हम? What you do now is you join px. Let's pick up yellow color. So मैंने अब p और x को ज्वाइन कर दिया है. Now you look at triangle PVX. इस ट्राइंगल पे देखो आप. Let me highlight all the sides in yellow or orange. पापा वेक्टर एक्स-रे PVX, ये ट्राइंगल अब हमारे पास आ गई. हमने इसमें ये x पॉइंट को ढूंढना है. ये x पॉइंट होना चाहिए 35 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे. ये हमारी कंडीशन है. तो इन दिस पापा वेक्टर एक्स-रे ट्राइंगल PVX ट्राइंगल, पहली बात तो ये है कि ये स्पेशल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एंगल V जो है वेक्टर एंगल, दैट इज 90 डिग्रीज एंगल. सो इट्स ए स्पेशल ट्राइंगल. दैट मींस नेपियर रूल कैन बी अप्लाइड. नेपियर रूल सेज कि कोई भी दो चीजें आपको पता हो, बाकी की चीजें आप ढूंढ सकते हो. तो यहाँ पे कौन सी दो चीजें हमें पता है? देखो, एक तो हमें पता है साइड पापा वेक्टर, इट इज द कोलैट ऑफ द वर्टेक्स. ये हमने ढूंढा हुआ है, वर्टेक्स का लैट लॉन्ग हमारे पास है. सो दिस इज नोन टू मी. और दूसरी चीज जो इस ट्राइंगल में मुझे पता है, दैट इज दिस एंगल. नाउ एंगल P ऑफ द PVX ट्राइंगल. ये एंगल P क्या है? इट इज द डी लॉन्ग बिटवीन विक्टर एंड एक्स-रे. एक्स-रे का जो लॉन्जिट्यूड है वो 35 ईस्ट है. वर्टेक्स का जो लॉन्जिट्यूड है ये भी मैंने ढूंढा हुआ है. सो दोनों का अगर मैं डी लॉन्ग निकाल लूं तो मेरे पास ये पापा एंगल आ गया, पापा विक्टर एक्स-रे ट्राइंगल का. सो टू थिंग्स आर नोन टू मी. विद दीज टू आई एंटर इनटू नेपियर्स रूल और मैं यहाँ पे ढूंढूंगा क्या? व्हाट एम आई गोइंग टू फाइंड आउट? कैन एनीवन टेल मी? Px. Very good. This side is what I'm going to find out, PX, Papa X-ray. And जैसे ही मुझे ये PX साइड मिलेगी, I have the latitude of this point. तो ये X-ray पॉइंट का लैटिट्यूड मेरे पास आ गया. मेरिडियन तो पहले ही पता था हमें, this has to be on 35 डिग्री ईस्ट, so that was already known. लैटिट्यूड इसका हमने ढूंढ लिया है, so X position is known to me now. So this way we can keep on finding out the intermediate positions or waypoints. This is very, very useful if you are making a great circle passage plan on a paper chart. ACDIS is not available to you, you have to make it on a paper chart. With this method, you can easily calculate your waypoints and prepare the passage plan. ये सर ये एंगल P का बता दीजिए. Say again, beta. सर एंगल P का बता दीजिए. Okay, angle P, yellow color का जो एंगल है. Now this angle is the angle at the pole contained between the meridian of the vertex, PV is the meridian of the vertex, and the meridian of point X. Okay, ये एंगल हमें पता है. कैसे पता है? We know the longitude of the vertex. हमने सबसे पहले vertex की पोजीशन को ढूंढा था, and we know the longitude of point X also. Okay, so इन दोनों का डी लॉन्ग अगर हम निकाल लेंगे तो एंगल P हमारे पास आ जाएगा. And sir, latitude is 90 minus px होगा ना? That's right, beta. Px is the colat, so latitude of point X would be 90 minus Px. That's right. Okay. So, or beta, any more doubt coming in calculating the intermediate point? सर इसकी लैंग्वेज कैसे आएगी क्वेश्चन में, मतलब कैसे पूछेंगे इसको?
Okay, beta, either they can tell you straight away, like find out the position where the great circle track crosses 35-degree east meridian. Straight away like that they can ask you. So you know that you have to calculate the intermediate point. मतलब प्लेनली दिया होगा, कुछ ऐसे ट्रिक नहीं होगी इसमें. Yes, no trick, beta. They will tell you straight away that this is the point to be found out. Okay. So, or beta, or any more doubt? Okay. Sir, we have a doubt regarding this textbook. Bolo beta. Because he has sent us too many books for this. So which book we require? Because he sent different author, like stability. He sent 2-3 books in the list. Okay. बेटा स्टेबिलिटी के लिए सरीन सर का लेक्चर आपका हुआ है या अभी होना है? हुआ है सर. हो गया ना? तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में उनसे ये कंफर्म कर लेना है. विद एवरी सब्जेक्ट लेक्चरर यू कंफर्म कि सर आपको रेफरेंस बुक कौन सी चाहिए. तो यू टेक दैट रेफरेंस बुक ओनली. Okay. Like for navigation, I told you we require Principles of Navigation, the blue color book. Practical Navigation by Captain Subramaniam with Nautical Almanac 1992. Chartwrok के लिए any book which you have is perfectly fine with me. If you are purchasing a new one, then Captain Chaudhry's Chartwrok is a good book. तो दो चार्ट हैं हमारे, है ना? We decided on 5048 and 5072, right? Yes, sir. Right, and along with it plotting tools. So जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, every faculty member will tell you which reference book he recommends or requires. Okay? और बताओ बेटा, और कोई डाउट? Okay. Okay. So beta, with this, what we have covered today, that is calculating the position of the vertex and using the vertex to find a intermediate position. इसके साथ हमारी great circle sailing complete, finished. तो हमारा एक मेजर टॉपिक जो है ग्रेट सर्कल सेलिंग का, वो इसके साथ कंप्लीट हो जाता है. अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी के लिए तो जो प्रैकनैव की बुक है, प्रैक्टिकल नेविगेशन की आपकी जो बुक है, उसमें ग्रेट सर्कल सेलिंग की एक एक्सरसाइज है. उसमें आपको उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं ग्रेट सर्कल के, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. तो आंसर्स मैच कर सकते हो आप, and that should give you sufficient experience to solve these great circle sailing related questions. मैं भी आपको एक assignment भेजूंगा, but that will be after we do composite sailing also. उसके बाद मैं आपको एक assignment भेजूंगा. So once you have done the basic questions from the PracNav book, then you can jump into that assignment and practice those questions. Sir, can you have this soft copy that you've shown in the PPT? Say again, Notes, beta. like, can you have the notes that you soft copy of the notes that you shown on the screen? Okay. बेटा जो मैंने स्क्रीन पे शो किया वो तो बहुत ही बेसिक चीज है, उसमें ज्यादातर डायग्राम भी हैं. लेट मी शो यू वंस अगेन. ये देखो बेटा, जो मैंने आपको शो किया है, इफ यू लुक हियर, देखो ये भी डायग्राम है. इट्स ए सिंपल डायग्राम. नंबर 2 अगेन ए डायग्राम. नंबर 3 अगेन ए डायग्राम. नंबर 4 कोसाइन फार्मूला.
कंडीशन आ गई इसकी। नंबर 5 नेपियर रूल दोनों केसेस में, एंड फाइंडिंग डिस्टेंस एंड फाइनल कोर्सेज, इनिशियल कोर्सेज, अगेन ए डायग्राम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने ये जो फॉर्मूलाज हैं इनका एक आई हैव प्रिपेयर्ड ए हैंडआउट, ये हैंडआउट मैं आपको भेजता हूँ। सो ऑल द फॉर्मूलाज, कोसाइन फॉर्मूला एंड नेपियर रूल बोथ आर मेंशन्ड देयर. That is basically what you require for doing these questions. Okay, sir. Let me send it to you right now. Just give me 1 minute. Okay. So बेटा ये रहा आपकी WhatsApp स्क्रीन पर the PDF of all these spherical trigonometry formulas. उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने लिखी हैं which is good to know because किसी क्वेश्चन में हो सकता है they put you a bouncer or something where those can be used. Otherwise also it's a good thing to know some conditions, some properties of the spherical triangle I have also mentioned. Okay. So और कोई डाउट्स बेटा? एनी डाउट्स टिल नाउ? सर इसमें नहीं है, वो जो आपने 13 क्वेश्चंस दिए थे ना सर घर पे करने के लिए, तो उसमें 13th क्वेश्चन था सर, उसका ना एक्चुअली सॉल्यूशन में उसका आंसर नहीं है आपके, तो मेरा आंसर तो है बट इट्स नॉट मैचिंग। मून का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैच नहीं हो रहा है। हाँ, तो समझ में गलती ना हो रही है। होगा सर, मैच तो हो गया। भाई यार सॉल्यूशन भेज देगा? ओके, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे यार। ओके, ओके बेटा, so then we can we are done for today's topic, so we can break off and see you in the next class. अगली क्लास में बेटा जो हम करने वाले हैं वो है composite sailing. So I will tell you what are the basics of composite sailing. Remember composite sailing जो है, जितना हमने अभी तक किया है काम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो क्वेश्चन करने के बाद इसे भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। कोसाइन फॉर्मूला, नेपियर रूल, स्फेरिकल ट्रायंगल, इसी पे आगे मींस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमने बना दिया है, अब सेकंड फ्लोर इसी के ऊपर बनेगा। सो डोंट फॉरगेट देम एंड वी विल बी गोइंग इनटू कंपोजिट सेलिंग। तो नेक्स्ट सेशन में हमारी कंपोजिट सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो विद कंपोजिट सेलिंग गेटिंग कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आवर पेपर इज डन। ओके, अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, और जनवरी एंड फरवरी बैच, तो जनवरी एंड फरवरी बैच के लिए ये जो टॉपिक है ये मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगा बेटा। दोबारा रिपीट कब करवाऊंगा? दिस विल हैपन ऑन 15th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। तो 15th मार्च से 14 अप्रैल का जो मॉड्यूल है उसमें ये चीज दोबारा होगी आपके साथ। इट विल बी ए रेपिटेशन फॉर यू एंड इट विल बी ए न्यू टॉपिक फॉर द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन देन। ओके, तो आपके लिए अच्छा है, एक बार इसी टॉपिक की रिवीजन भी होने वाली है। Okay, sir. Okay, so that's all for this session beta. See you in the next session. Bye bye. Bye sir.